Hello friends, I have come up with my notes on MCQ questions. Today I am touching a few questions from the matrices. Look here, the first MCQ question is this. A is equal to Aij m into n is a square matrix. Then you have to choose one of the options. M is less than n, M is equal to n, M is greater than n, or none of these. So there are four choices. So it is a square matrix. Length and breadth equal होंगे. Length and breadth equal होंगे. M and n should be equal. This is length, this is breadth. They should be equal. Number of rows should be equal to number of columns. Look here, I have given you the explanation. This is the explanation. Answer is m is equal to n. We know that square has length is equal to breadth. That is m is equal to n. Number of rows is equal to number of columns. So the option B will be there. So option B is there. M is equal to n. Now let us go to the next. Question is, second question, if a matrix is both symmetric and skew symmetric matrix, then there are four options again. A should be whether skew symmetric, identity matrix, zero matrix or symmetric matrix. अब देखिए इसका आंसर आएगा जीरो मैट्रिक्स. Now I tell you the reason. A is symmetric, then you know the condition. अगर A symmetric होगा उसका ट्रांसपोज A के बराबर होगा. If A is skew symmetric, A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर होगा. From 1 and 2, from 1 and 2, look here. इधर भी लेफ्ट साइड भी A का ट्रांसपोज है और इधर भी लेफ्ट साइड पे A का ट्रांसपोज है. लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, राइट साइड इक्वल टू राइट साइड. सो A इज इक्वल टू माइनस A. माइनस A को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, इट हैज़ बिकम 2A इज इक्वल टू 0. इट मीन्स A इज 0. हेंस इट शुड बी ए जीरो मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर. It says, question number 3, the matrix A 2 4 minus 8x does not have inverse if x is equal to, there are four choices. A is 16, B is minus 16, C is 8, D is minus 6. Now it says it doesn't have inverse. अब देखिए जब तक आपको A इन्वर्स का फार्मूला नहीं पता होगा तो ये ठीक से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इट्स आंसर इज माइनस 16. हाउ इट हैज़ रीच्ड माइनस 16? नाउ लुक हियर. जितने भी सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है. अब इसको डेरिवेटिव बना दो, ये आई मीन डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है. अब इसको डिटर्मिनेंट बना दिया, बार्स लगा दो. So it has become 2x plus 32 equal to 0. X is equal to minus 16. So formula for inverse is adjoint of A divided by determinant of A. A cannot be 0. अगर हमने A को 0 लिख दिया तो फिर इसका इन्वर्स नहीं होगा. हमने तो इसको 0 बना दिया है, देखो 0 बना दिया है, A को 0 बना दिया है. So it cannot be the inverse. X should not be, x is equal to minus 16 is the answer, and this is what I told you. Out of the four choices, minus 16, that is B is the answer. Now let us go to the fourth question. A is given to you as matrix of iota 0 0 iota, and iota you know is square root of minus 1.
You have to find the value of a raised power n. So 4 options are there. N can be 4, n can be 6, n can be 5, n can be 8. The answer will be n equal to 8. That is D option will be there. Now how it has come? Let us find a square. A square is, what is a? Iota 0, 0 iota. Multiply कर दो. A into a is a square. So it becomes iota square 0, 0 iota square. देखिए 2 पावर है, यहाँ पे भी 2 पावर है. अब क्यूब निकाल लो. a क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a. अब देखिए ये 3 पावर बन गई. यहाँ पे भी 3 पावर है. n पावर बनाने के लिए n यहाँ पे लगाना पड़ेगा. When n will be equal to 8, then a raised power 8 will become I. So यही आपको पता करना था कि a की वैल्यू कितनी आएगी. I आएगी. कब आएगी? When n will be equal to 8. When n will be equal to 8. So this is how we shall be attempting the multiple choice questions. I'll come up with other types of questions also. So this is actually 20 मार्क्स का खजाना. इसमें खजाने के अंदर क्या क्या है? MCQ हैं, VCA very short answer questions, TF true false questions, and fillers means fill in the blanks. So I'll be coming up for few days with this खजाना. लूट सको तो लूट लो. 20 मार्क्स का खजाना है. बहुत इजी क्वेश्चन हैं. इसमें आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, which I'll be clearing up as and when the questions come before me. Thank you very much for watching this. Please like the videos and subscribe it. Thank you. Good night. God bless you. Bye.